average chapters. So we are going to start our new topic or new chapter, and the name of chapter is average. Average. The question of average we will solve. The questions related to the average we will solve by three methods. First one is basic method. What is basic method? Basic method is nothing but average is equals to the sum of sum of all observations, sum of all observations so we are going to start our new topic, average. The questions related to the average we will solve with the help of three methods. First method is basic method. First method is basic method, and what he says, according to basic method, the average is equals to the sum of all observations to the number of to the number of observations to the number of observations. This is our basic method. This is a basic method. Suppose example, suppose example, what is the average of, what is the average of 5, 6, 7, 8, and 12? What is the average of 5, 6, 7, 8, 12? So what you will do, first of all, you will calculate this sum. What is sum? 5, 6, 11 plus 7, 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 12. 5, 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 12. And what is this? What is this? 5, 6, 11, 7, 18 or 8, 26, 26 plus 12, 38. If you are going to calculate average, average is nothing but sum upon number of observation. Observation means number of quantity. How much? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 35, 7.6. So the average will come out to be 7.6. This is your basic method. This is your basic method to calculate average. To calculate average. Now, now, second method is second method is second method is deviation method. Second method is deviation method. Deviation method. Although deviation method I have explained in the chapter allegation, although this method I have already explained in allegation chapter, I am going to explain it again. What is deviation method? According to this method, suppose in a classroom, in a classroom, in a classroom, the average marks, the average marks scored by scored the average marks scored by boys and girls
boys and girls are boys and girls are 80 percentage and 90 percentage respectively. 90 percentage respectively. 90 percentage respectively. If there are if there are 60 percentage of boys, if there are 60 percentage of boys in the classroom, 60 percentage of boys in the classroom, in the classroom, then then what is the average of what is the average marks what is the average marks scored by the whole class, scored by the whole class, scored by the whole class. This question we will solve with the help of three more methods. First one is deviation method, second one is allegation method, and the third one is we will solve with the help of weighted average method. Weighted average method. So we are discussing average. First, we have seen the different methods to average questions related to the average. First, first method was the basic method. Basic method is nothing but average is equals to the sum of all observations to the number of observations. We have seen one questions related to the basic concept. We have solved one question related to the basic concept. Then we are going to see three more methods to calculate questions related to the average. So we are going to explain with the help of an example. What is this? In a classroom, the average marks scored by boys and girls are 80 percentage and 90 percentage respectively. If there are 60 percentage of the boys in the classroom, then what is the average marks scored by the whole class? Average marks scored by the whole class. First, we are going to solve this question with the help of deviation method. बेटा क्लासरूम कोई भी हो, क्लासरूम का स्ट्रेंथ कितना होता है? 100%. What we are assuming the strength of class is 100 percentage. Out of these 100 percentage, out of this 100 percentage, there are 60 percentage of boys. There are 60 percentage of boys. If boys are 60 percentage, then girls will be 40 percentage. If I am going to take ratio of boys and girls, this is nothing but 3:2. This is nothing but 3:2. So first I am going to solve this question with the help of deviation method. With the help of deviation method. With the help of deviation method. What this method says, boys and girls ratio in classroom is 3:2, and the marks scored by boys are 80 percentage and girls are 90 percentage. Marks scored by boys are 80 percentage and marks scored by girls are 90 percentage. तो डेविएशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डेविएशन? बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, आइदर आप 80 को लेके सॉल्व करो या 90 को लेके सॉल्व करो. सपोज मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ दी एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास इज 80 percentage. Suppose the average marks of class is 80 percentage, but this is 10 more percentage than 80 percentage. तो बेटा ये 10 percentage हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. 10 percentage एवरेज मार्क्स ज्यादा है कितने बच्चों का बेटा? 2 यूनिट बच्चों का, बिकॉज गर्ल्स आर 2. एंड व्हाट आर द टोटल स्ट्रेंथ? एंड व्हाट इज टोटल स्ट्रेंथ? 5 divided by 5. So this will come out to be 2 into 2,
means the average marks will become 84 percentage. Average marks will become 84 percentage. So this is the deviation method to calculate the average of whole class. I am going to explain again the deviation method. Suppose I am taking the average of whole class is 90 percentage. Average of whole class is 90 percentage. The ratio of boys and girls is 3:2. Average marks scored by boys are 80 percentage, girls are 90 percentage. If I am going to take average marks as 90 percentage, so this is 10 percentage less than it. This is 10 percentage less than average marks, means 10 percentage of what? 3 unit student, but total students are 5 unit. So again, what this is 90 percentage minus 6 percentage. After solving this, you will get 84 percentage as the average marks. 84 percentage as the average mark. So beta, this is our deviation method. Deviation method deviation method to calculate to calculate the average. Beta, is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Say yes or no. Is this clear to everyone? How to calculate average with the help of deviation method. With the help of deviation method, suppose I am going to solve this question, or I am going to calculate average with the help of alligation method. With the help of alligation method. With the help of alligation method, although we have already discussed the allegation method, but I am going to tell one more time what is allegation method to calculate average. To calculate average, first we will take the average marks scored by boys and girls. Average marks scored by boys are 80 percentage, and average marks scored by girls are 90 percentage. Or we can take it 80 marks and 90 marks. 80 marks and 90 marks. What is the ratio of boys and girls? The ratio of boys and girls is 3:2. 3:2. ठीक है बेटा? Boys and girls is 3:2. तो बेटा लिसन वेरी केयरफुली, ये 80 है 90 है, मीन्स कितना ज्यादा मार्क्स है बेटा? 10 मार्क्स जाता है. अब ये बच्चों, अगर ये 10 मार्क्स आपको बेटा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बेटे बॉयज यानी कि 6 आएगा, और बॉयज के पास 6 मार्क्स जाएंगे, और गर्ल्स के पास बेटा कितना मार्क्स जाएगा? 4 मार्क्स जाएगा. बॉयज के पास 6 मार्क्स जाएंगे, गर्ल्स के पास बेटे कितने मार्क्स जाएंगे? 4 मार्क्स जाएंगे. ठीक है बेटा? अब देखो, यहां पर कोई ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको 90 से सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए, और इसमें बेटा कोई ऐसा क्वांटिटी होगा जो 80 और 4 को जोड़ के आए बेटा, ऐड करने के बाद. तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, तो दिस विल कम आउट टू बी 84. सेम, दिस विल कम आउट टू बी 84. तो दिस 84 इज नथिंग बट दिस इज द average marks. This is the average marks of the whole class. Average marks of the whole class. So this is the allegation method. Although we have already seen allegation method, approximate 4-5 hours we have discussed allegation method. One more method is left to calculate average. And what is this? Weighted average. What is this? Weighted average. What weighted average said? What weighted average says? So average of whole class is nothing but
Boys score 80 percentage, number of boys 3 plus 90 percentage, number of girls 2 upon total 3 plus 2. If you are going to solve it, you will get 84 percentage as your answer. 84 percentage as your answer. Beta, tell me yes or no. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? How to calculate? How to calculate the average? How to calculate the average? The basic method, first method is basic method. Basic method is nothing but sum of all observations to the number of observations. We have taken an example related to the basic method. Second method, we are going to see डेविएशन मेथड. डेविएशन मेथड बेटा एक एग्जांपल के हेल्प से हमने सॉल्व किया है डेविएशन मेथड. डेविएशन मेथड ऑल्दो हमने पहले भी सॉल्व किया है. फिर बेटा एक और मेथड होता है एलिगेशन मेथड. एलिगेशन मेथड कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं वो भी मैंने आपको बताया बेटा. थर्ड मेथड वी हैव सीन वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज बेटा हमारा ये होता है. तो दीज आर दी बेसिक मेथड्स. दीज आर दी बेसिक मेथड्स to calculate the average. To calculate the average. Now I am going to explain one two key points which will be very helpful to solve the question. बहुत हेल्पफुल होंगे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट वन बेटा, फर्स्ट वन, you know very well what are the natural numbers. What are the natural numbers? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन. ये हमारे बेटा नेचुरल नंबर होते हैं. फिर एक होता है बेटा हमारा होल नंबर. एक होता है बेटा होल नंबर्स. होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होता है बेटा? like 0 1 2 3 and so on. ठीक है. and third one is even number. third one is बेटा even number. even number क्या होता है? a number which is divided by 2. वो हमारा क्या होता है बेटा? even number होता है. like 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट. ये बेटा हमारा इवन नंबर होता है. एक हमारा फोर्थ क्या होता है बेटा? ऑड नंबर. ऑड नंबर. ऑड नंबर क्या होगा बेटा? जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो हमारा ऑड नंबर होता है. एंड व्हाट इज दिस? 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट. ठीक है. एक और बेटा एक और नंबर होता है हमारा. एंड व्हाट इज दिस? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर. प्राइम नंबर बेटा क्या होता है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर जो या तो अपने आप से या 1 से डिविजिबल होगा वो बेटा हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा. लाइक 1 3 5 7 9 नहीं होगा. 9 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. 11 13 15 फिर से डिवाइड हो जाएगा. 17 अपने आप से होगा. 19 डॉट डॉट डॉट. तो ये सब बेटा हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर्स होते हैं. एक और बात बेटा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग. बेटा ऑलवेज रिमेंबर ऑल्दो ये बात आपको पता होगा, ऑलवेज रिमेंबर ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, इन दोनों का सम ऑलवेज क्या होता है बेटा? इवन नंबर ही होता है. ठीक है. एक बात बेटा, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, ऑड प्लस इवन क्या होगा बताओ मेरे को. और बेटा एक होता है इवन प्लस इवन, और ये ऑलवेज क्या होता है बेटा? इवन नंबर ही होता है. ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड मीन्स सपोज मैं 3 प्लस 3 कर रहा हूं तो बेटा ये क्या आएगा? 6 आएगा. इवन प्लस इवन मीन्स 4 प्लस 4 करूंगा तो बेटा ये 8 आएगा. 8 भी क्या है? इवन नंबर है. और बेटा ऑड प्लस इवन करेंगे, ऑड प्लस इवन. सपोज 1 प्लस 3 ऑड प्लस इवन
1+3 करूंगा तो ऑड ऑड हो जाएगा, 1+2 करूंगा तो बेटा क्या आएगा, 3 आएगा, मीन्स ये क्या होगा बेटा, ऑड होगा, ऑड होगा। ठीक है, पता है बेटा ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वी विल सॉल्व सम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस मोर क्विकली एंड इजीली। बेटा सब मैं आपको ये अप्लाई करना बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहो बच्चों। नाउ सो वन मोर थिंग, so this is the basic concept you have to remember, although जब मैं आपको नंबर सिस्टम कराऊंगा तो बेटा वहां पर भी ये सारी बातें बताऊंगा अगेन, बट ठीक है। नाउ बेटा कई बार बच्चों क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है बंदा कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव, the average of the square of 5 consecutive natural numbers is this, then what is the average of smallest and largest number, then what is the average of smallest and largest number। तो देखो बेटा कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर ये पूछ रहा है कि what is, देखो ये क्वेश्चन एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। This concept is, I am going to explain with the help of one question. I am going to explain this concept with the help of a question. With the help of a question. See, if you are going to see, first listen, question number 12. The average of square of 5 consecutive odd natural numbers is 233. The average of square of 5 consecutive odd natural numbers is 233. Then what is the average of the largest number and the smallest number? Then what is the average of largest number and smallest number? तो बेटा क्या बोल रहा है, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, ऑड नेचुरल नंबर्स बोल रहा है। सपोज बेटा फर्स्ट ऑड क्या है, x है, सेकंड क्या है, x+2, थर्ड क्या होगा बेटा, x+4, फोर्थ क्या होगा बेटे, x+6, और फिफ्थ क्या होगा बेटा, x+8। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नंबर को पहले ये ज्यूम करेंगे x, x+2, x+4, x+6, x+8। बेटा ये ऑड, मैंने ये ज्यूम किया कि x कोई ऑड नंबर है, ऑड में इवन ऐड करते हैं तो वो ऑड ही बनता है। तो बेटा स्टूडेंट क्या करेंगे, x² प्लस x+2 स्क्वायर प्लस x+4 स्क्वायर प्लस x+6 स्क्वायर प्लस x+8 स्क्वायर अपॉन 5 और दे विल इक्वेट 233। बेटा अगर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे ना तो बेटे हमें कहीं ना कहीं ये बनेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बेटा, फिर हमें रूट फाइंड आउट करने होंगे। क्या फाइंड आउट करने होंगे बेटा, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो बेटे एक्चुअल में क्या है ना, ये मेथड अगर आप अप्लाई करोगे ना बेटे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर, बट दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। आई एम नॉट सेइंग कि यहां से आपको आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, बट दिस इज द टाइम टेकिंग प्रोसीजर, टाइम टेकिंग प्रोसीजर।
तो बेटा हम नंबर्स को कुछ इस तरीके से ज्यूम करेंगे बेटा कि हमें सिर्फ इसी टाइप से मिले, हमें कि हमारा जो फाइनल इक्वेशन आए ना वो कुछ इस टाइप से आए, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, सो दैट वी कैन क्विकली सॉल्व। हमें नंबर्स को इस टाइप से एज्यूम करना है बेटा कि जिससे हमारा रिलेशन क्या बने, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी फॉर्म में, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। बेटा अगर मैं यहाँ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं तो हाउ आई विल सॉल्व, मैं ज्यूम करूंगा बेटा। देखो ये बात वैलिड होती है कि अगर आप ऑड में इवन नंबर ऐड करें तो ऑड बनेगा, अगर ऑड से मैं इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी क्या बनेगा, ऑड ही बनेगा। आप एग्री करते हो इस बात से? बेटा अभी जस्ट हमने देखा है कि ऑड प्लस इवन जो होगा इसका सम भी क्या होगा बेटा, ऑड होगा। और अगर बच्चों मैं ये लिखूं ऑड माइनस इवन तो ये भी बेटा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। बोलो इस बात से एग्री करते हो आप लोग? तुषार क्या आप इस बात से एग्री करते हो? ऑड प्लस इवन इक्वल्स टू ऑड, देन ऑड माइनस इवन इक्वल्स टू ऑड। वेरी गुड। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। सपोज एक नंबर x हो जाएगा तो एक क्या होगा x-2 और एक क्या होगा बेटा x-4। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ इस टाइप से हम लोग एज्यूम करेंगे। दिस इज आवर फोर्थ नंबर एंड दिस इज आवर फिफ्थ नंबर। ठीक है बेटा, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो ये सब आपने पढ़ा होगा बेटा कि a प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बेटा a माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो जब हम ये ऐड करेंगे ना, मैं अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा ना बेटा तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 2ab मींस जो हमारा ये इक्वेशन बन रहा था ना पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर मैं इस टाइप से एज्यूम करूंगा ना अपने नंबर्स को बेटा तो मेरा बी एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ यही टर्म बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से बेटा मैं क्विकली एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल? क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं बेटे? ठीक है, तो हम कुछ इस टाइप से नंबर को एज्यूम करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में, सो दैट वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन मोर क्विकली। अब देखो बेटा अगर मैं इस टाइप से सॉल्व करता हूं ना, इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व लाइक इन दिस वे, तो देखो क्या बनेगा, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 स्क्वायर प्लस x प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 था, 233 से मल्टीप्लाई करेंगे। 233, 200 इंटू 5 1000, 33 इंटू 5 165। तो बेटा ये आएगा 2165, सॉरी 1165, ये आएगा 1165। अब देखो बेटा सॉल्व करते हैं बेटा, ये सॉल्व करेंगे तो पता है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x और बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और बेटा ये एक्स स्क्वायर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और बेटा फिर से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। तो देखो 8x 4x 8x ये सब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या रहेगा, 5x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 है ना, 5x स्क्वायर प्लस ये, और ये सब क्या है बेटा, किसके इक्वल है, 1165। ठीक है बच्चे, देखो 4 4 8 16 16 32 32 प्लस 8 40। तो बेटा 5x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, 1125 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ठीक है 1125 डिवाइडेड बाय 5 225, एक्स स्क्वायर 225 आएगा बेटा और x कितना आएगा बच्चे, 15 आएगा। x क्या होगा, 15 होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बेटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका
x-4 ना, और लार्जेस्ट नंबर क्या है x+4। और एक और बात मैं आपको बताता हूं बेटा, अगर आप यहां से देखोगे ना, इफ यू विल सी, नंबर मैंने क्या एज्यूम किया है x-4, x-2, x² x+2 x+4। तो बेटा ये एक तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है ना बेटा, तो जो मिड टर्म होता है ना, मिड टर्म, जो मिड टर्म होता है वही क्या होता है बेटा, एवरेज होता है। वही क्या होगा बेटे, एवरेज होगा। तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो मिड टर्म क्या है, मिड नंबर क्या है एक्स, एक्स मिड नंबर क्या है बेटा, देखो यहां से अगर मैं देखूंगा तो मिड नंबर क्या है एक्स है। देखो ये नंबर्स आपने ज्यूम किए हैं बेटा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अगर कोई सीरीज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा बेटा, तो जो मिड नंबर होगा वही क्या होगा, एवरेज होगा हमारे ऑब्जर्वेशन का। तो मैंने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो यही बेटा मेरा क्या होगा, मिड टर्म होगा। यही बेटे क्या होगा, मिड टर्म होगा। बोलो बच्चों, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई हैव एक्सप्लेन? बेटा क्या ये क्लियर है मैंने यस क्या सर। किया है ना? देखो, इनिशियली स्टूडेंट क्या करेंगे, जिनको पता नहीं है बेटा, वो नंबर यही एज्यूम कर दे। मैं भी पहले यही एज्यूम करता था बेटा, जब तक एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस मैंने नहीं किया था अच्छे से। पहले मैं भी यही एज्यूम करता था, x, x+2, x+4, x+6। बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। बट बेटा यहां से आपको ना एक, जब आप ये एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ पॉलिनोमियल लाइक दिस ax² प्लस bx प्लस c। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको रूट्स मिलेंगे। बेटा ये मेथड आपका टाइम टेकिंग है। हम नंबर्स को कैसे एज्यूम करेंगे, इन दिस मैनर, जिससे हमारा क्या होगा, जो ये 2ab या जो हमारा 2x वाला टर्म आ रहा था ना, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। x वाला जो टर्म आ रहा था, सिर्फ x² और कांस्टेंट का टर्म मिलेगा हमें। x² और कांस्टेंट का टर्म मिलेगा, तो फिर हम क्विकली उसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा हमारे पास नंबर का वैल्यू आ जाएगा। बोलो बेटे, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? क्लियर है ना बेटे? टेल मी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा, कुछ में नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम मोर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट और दिस फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली। कुछ मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताता हूं बेटा, उसे आप यूज करेंगे तो हमें आंसर बेटा और क्विकली हमें मिल जाएगा। वी विल गेट द आंसर मोर क्विकली। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, सॉरी एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो बेटा जब हमारे पास सम मिल गया तो हम देखो एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कितना हो जाएगा, एन प्लस वन का हाफ। कई बार आपने सुना होगा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो हम क्या लिखते थे, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स। तो बेटा ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ listen to me very carefully. Today I am going to explain all the concept. Some problem we will discuss today and the remaining problems we will discuss tomorrow. So first thing you have to remember, the sum of n natural numbers, the sum of n natural numbers, the sum of n natural numbers. N natural numbers are just explain to you what are the natural numbers, what are the natural numbers, what are whole numbers, what are even numbers, what are odd numbers, and what are prime numbers. So बेटा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, जो बेटा n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है बेटा, दिस इज नथिंग बट n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। if you are going to calculate if you are going to calculate the average of n natural numbers, what is average? Average is nothing but sum of observation upon total number, sum of observation upon total number. So what is the value of average? You will get the value of average n plus 1 divided by 2, n plus 1 divided by 2. So this is the average of n natural numbers. ठीक है बेटा, second point, the
sum of the squares of sum of the squares of n natural numbers. ठीक है बेटा? If you will see the square, this is nothing but n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 divided by 6. Again, I am going to calculate the average. Average is nothing but sum of observations upon number of observations. So what is the value of average? You will get average is nothing but n plus 1 2n plus 1 divided by 6 divided by 6. So this is the average of square of n natural numbers. Third one is sum of cubes of n natural numbers. Sum of cube of n natural numbers. And what is this? This is sum of n equals to n into n plus 1 divided by 2 or whole square divided by 2 whole square. Sum of n cube. Sum of n cube. ठीक है बेटा? Sum of n cube. If you are going to calculate the average, this is nothing but sum of n cube upon n. So after solving this, you will get average equals to n into n plus 1 square divided by 4. कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स तो बेटा बहुत पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बहुत वो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं बेटा. ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये फॉर्मूला आप तब पढ़ते होंगे बेटा जब आप मैथमेटिकल इंडक्शन से आप किसी आइडेंटिटी को प्रूव करते होंगे, तो तब भी आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे बेटा, जब आप मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूला आप यूज करते होंगे. सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना. हाँ सी. तो बेटा अभी हमने 3 पॉइंट देखे हैं. सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, देन एवरेज की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सेकंड थिंग वी हैव सीन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स. स्क्वायर देखा, फिर हमने बेटा एवरेज कैलकुलेट किया. आफ्टर दैट वी हैव सीन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स. वंस वी गेट द सम average, we can get more quickly sum of number cube upon number of observation. ठीक है बेटा? Now moving forward, next one is fourth point, sum of first n even numbers. Sum of first n even numbers. Sum बेटा मैं कैलकुलेट करूंगा. फर्स्ट n even numbers means like 2 plus 4 plus 8 plus 2 plus 4 plus 6, 2 plus 4 plus 6 plus 8 and so on plus 2n. तो बेटा this sum is nothing but this is n into n plus 1, or I can say sum of 2n equals to n into n plus 1, where n is a number 1 2 3 4 it can be. So I am going to take, or I am going to calculate the average. Average is nothing but sum of 2n upon n. So this will come out to be n plus 1.
So beta, this is the average of first n even numbers. First n even numbers. One more thing. One more thing. Point number 5. Sum of sum of first n odd numbers. Sum of first n odd numbers. बेटा ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ सम यू कांट कैलकुलेट द एवरेज. जब तक आपको सम का वैल्यू पता नहीं चलेगा बेटा, आप एवरेज नहीं कैलकुलेट कर सकते. द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर्स 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन +2n - 1. तो बेटा ये सम क्या होता है? दिस इज एन स्क्वायर. दिस इज एन स्क्वायर. इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज, तो एवरेज बेटा कितना आएगा? एन आएगा. एवरेज विल कम आउट टू बी एन. ठीक है बेटा. वन लास्ट पॉइंट, point number 6. One last point number 6. This was our point number 5. Point number 6. What this point says? This point says that average of this point says that average of an AP series. AP means arithmetic progression. Average of an AP series is always the midterm of is always the midterm of that particular midterm of that particular series. Midterm of that particular series. बोलो बेटा, tell me, is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Tell me बच्चों, is this clear to everyone? What we have seen so far, today's topic, we have started with today's topic, and the name of topic is average. First we have seen the different methods to calculate average. First one is wait Nissan. First one is basic method. Basic method is nothing but sum of all observation to the number of observations. ये मेथड हमने एक एग्जांपल के हेल्प से एक्सप्लेन किया. फिर बेटा 3 और मेथड है हमारे पास एवरेज कैलकुलेट करने के लिए. डेविएशन मेथड, एलिगेशन मेथड और वेटेड एवरेज मेथड. ठीक है बेटा. तो ये तीनों मेथड हमने एक क्वेश्चन के हेल्प से सॉल्व किए हैं बेटा. ठीक है. व्हाट इज डेविएशन मेथड? बेटा मैंने आपको ये बताया, 2 तरीके से डेविएशन लगाना भी बताया, रिवर्स ऑर्डर में भी और फॉरवर्ड ऑर्डर में भी. ठीक है बेटा. फिर हमने देखा एलिगेशन मेथड, और 2 एलिगेशन मेथड वी हैव स्टडीड वेरी डेप्थ. बहुत डीपली हमने बेटा एलिगेशन को डिस्कस किया है. आज फिर से मैंने आपको रूबरू करा दिया एलिगेशन से. आज फिर से मैंने बेटा आपको एलिगेशन से. ठीक है. नाउ after that we have seen weighted average method. After that we have seen some standard identity. What is natural numbers, what are whole numbers, what are even numbers, what are odd numbers, and what are prime numbers. After that we have seen some standard results. odd plus odd even होता है, odd plus even odd होता है. और बेटा सेम थिंग मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, वन मोर थिंग. एंड व्हाट इज दिस odd minus even. odd minus even भी क्या होता है बेटा? odd ही होता है. odd minus even भी क्या होता है? odd ही होता है. ठीक है. आफ्टर दैट
एक मेथड मैंने आपको बताया है। सपोज करो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कंसेक्यूटिव, तो बेटा आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो। अगर यहाँ स्क्वायर ना बोल के नॉर्मल कंसेक्यूटिव भी बोलता ना, तो हम इस टाइप से एज्यूम कर लेते, कुछ टर्म्स हमारे क्विकली कैंसल आउट हो जाते। ठीक है बेटा। आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन सम मोर स्टैंडर्ड रिजल्ट, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। आपको ये पहले से पता है, कोई मैंने नई बात नहीं बताई है, यू नो इट very well. What is sum of n natural numbers? N into n plus 1 divided by 2. And what is average? N plus 1 divided by 2. After that, what we have seen? We have seen sum of the square of n natural numbers. And what is this? N into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. After that, we have seen the average of square of n natural numbers. After that, sum of cube of n natural numbers, sum of cube of n natural numbers। ठीक है बेटा। then average। after that we have seen point number 4, the sum of first n even numbers। what are even numbers? 2, 4, 6, 8, like this। the sum of n even numbers is nothing but n into n plus 1। and what is average? N plus 1। After that we have seen sum of first n odd numbers, sum of first n odd sum of first n odd numbers। what are odd numbers? 1, 3, 5 dash dash dash। so what is average? what is average? N। and one last point I have given to you, the average of an AP series is always the midterm of that particular series। ये कॉन्सेप्ट बेटा, ये एपी वाला कॉन्सेप्ट बेटा हमने we have seen this concept, of AP series इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट याद होगा तो बेटा मैं क्विकली आंसर कर दूंगा x इज इक्वल 15। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो दो स्टेप और करेगा, he will solve two more step। पहले वो ये देखेगा x माइनस 4, तो बेटा ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। देन ही विल कैलकुलेट x प्लस 4, वो क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर होगा। देन ही विल डू द एवरेज, स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा अगर ये पॉइंट हमें याद होगा तो वी कैन डायरेक्टली मार्क और आंसर। बोलो बेटा, से यस और नो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Now I am going to show you some standard questions, standard or I can say very basic questions। first we will solve very basic questions, very basic questions। very basic questions। See, question number 1, the average of first 100 positive integers, the average of first 100 positive integers। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3, यही तो होते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स। तो व्हाट इज एवरेज? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। C हाँ C हाँ 50, 50.5. हाँ 50.5 इज द करेक्ट आंसर। देखो रिजल्ट अगर हमें याद होगा ना स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो हम क्विकली कर लेंगे, क्विकली हम सॉल्व कर लेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 71। 1 to 71, 71 यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? n को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज पूछ रहा है स्क्वायर का, जहां पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया है ना, स्क्वायर का अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे बेटा, यूज दिस फॉर्मूला, एवरेज ठीक है। n प्लस 1 to n plus 1 divided by 6, you will get the average of square of natural numbers। you will get the average of square of natural numbers। tell me the answer, tell me the answer। हिमांशु, tell me the answer for question number 1716। हाँ 1716, वेरी गुड बेटा।
1716. Very good, Apur. Very good. Solve question number 3. Solve question number 3. Solve question number 3. सर 50 होगा ना?